Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to YourPedia Education. So I'm Vijayneder Tyagi, and as all of you know, recently HPCL has released a notification regarding recruitment in different disciplines, engineering disciplines as well as non-engineering disciplines. Okay, so YourPedia is starting a module, Tailor module for the preparation of this HPCL examination in engineering disciplines, mainly mechanical engineering, electrical engineering. Okay, so HPCL exam mein syllabus. What is the syllabus? We have discussed in our video also recently. So in non-technical part, we know there are 85 questions. So 34 questions are from aptitude section and 34 from reasoning section and 17 questions from English section, right? So 34 questions from aptitude section is really very important, a big number. And the time they are giving to solve the questions is less than 1 minute actually. So what strategy you have to follow? Actually, the questions they ask in aptitude section, so some questions are very easy. They can be solved in 30 seconds or 40 seconds or 20 seconds. However, there are some questions, not big number, but a small number of questions, which are time consuming. If we analyze the previous year papers of HPCL, so in some questions, more time is required, more than 1 minute may be required. Lengthy calculation is there. Okay. So during the examination, if you feel that this question may take some time, right, then better to skip that question that time, because you have to save the time also. That is very, very important, right? And later on you can move to that question. So this is strategy you have to follow, which we will discuss at the time of exam also later, how to proceed. But initially also you should keep in your mind that better to skip lengthy questions. 3 to 4 questions, definitely they will be time consuming questions, especially in aptitude section. Okay, in technical, easy questions are there, they can be solved in 10 seconds. So you save the time from there. That time you can utilize in solving the aptitude questions. Okay, so in my today's lecture, first of all, let me check some messages. So Subham Prabal, good evening. Subham Prabal, good evening. ओके, कोप राउंड का हम डिस्कस बाद में करेंगे शुभम, अभी ये क्लास है एचपीसीएल के रिगार्डिंग, राइट? सो कोप के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, राइट? सो इन दिस लेक्चर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टेकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर of HPCL examination of mechanical branch, and from there I have chosen questions of aptitude section which I am going to solve in this lecture. Okay, so those who are interested in preparation of HPCL, who want to join some good PSU, a good job in India, right? So they should start preparing for HPCL, and you can start preparation with YourPedia also. Okay, so let us start solving the questions, and this lecture will give you idea that what kind of question they ask and what is the difficulty level and how we can solve the problems. Okay, so here is my first question. And one more thing, in the description of this video there will be some Google form, okay, regarding your HPCL preparation. So you can fill the Google form if there is any Google form. Okay, so first question we have taken from mechanical paper. If m is equal to 1500 and n equal to 2000, then m is how much percentage less than n? Okay, m आपका 1500 है और n 2000 है, तो m कितने परसेंट कम है, लेस देन n, राइट? ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है, तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे और सोल्व करेंगे मेरे साथ. सो बेटर टू सिट इन दिस लेक्चर विद पेन एंड नोटबुक एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस. ओके, एक तरीके का आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ओके, so those who are going to prepare for this HPCL exam, kindly respond in the chat box. Any student who is here who is planning to prepare for HPCL exam, please respond in the chat box and solve these questions, right? Okay, 25%. Very good, Subham Praval, very good. So m is how much percentage less than n? Okay, then n मतलब
compared to this. So in this case, what is the difference? There is difference of 500, this minus this. Okay, so we can write n minus m. This is the difference, and we have to calculate the percentage less than n. So this will be in denominator or into 100. Simple question. So 2000 minus 1500 means 500 or divided by 2000. Okay, or into 100. So clearly 25% will be the answer. So ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, आप देखते ही कर सकते हैं. लेस देन दिस. सो परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एचपीसीएल एग्जाम के लिए, आपको इसको प्रिपेयर करना है और क्लास के अंदर डिटेल में हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन. So read the question and try to solve this. It is a question based on wages actually. Okay, time and work we can say, and wages including the wages. So read the question and write down the answer in the chat box. एक बार क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये किस कैटेगरी में जाएगा? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, राइट? ये क्या है आपका? लेंथी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा ये. सो इन एग्जाम बेटर टू स्किप, उस टाइम पे इसको स्किप करना उस टाइम पे, ठीक है ना. बट लेटर ऑन आफ्टर सॉल्विंग a lot of different questions you can come back to this question and then you can try to solve. Okay, so क्या करना है इसमें? देखो, S1, S2 and S3 alone can complete a work in 12 days. So finally ये S1 कर सकता है 12 days में, S2 can complete a work in 18 days और S3 can complete in 24 days, right? Now they received 3024 rupees to complete the work. So how will be the distribution of money? So distribution of money is done in proportion to the work done by them. Okay, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में जो हम रूल यूज करते हैं वो क्या होता है कि जितना वर्क जिसने किया उसी अकॉर्डिंग प्रपोर्शन में उसको पेमेंट मिलेगा. तो सेम रेशियो में हमें निकालना है अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो मेनली वी हैव टू कंप्यूट वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल. ओके, S1 ने कितना वर्क किया ओवरऑल, S2 ने ओवरऑल कितना वर्क किया, S3 हाउ मच वर्क हैज डन. सो we will compute the ratio and then in that ratio we will divide this 3024. Okay, and then we will get the answer. So they begin the work together, but S1 leaves the work after 3 days. Okay, read this line. So for first 3 days, okay, for first 3 days all of them are working na. S1 is working, S2 is working and S3 is working. For the first 3 days all of them are working. Clear? And S3 leaves the work 7 days before the completion of the work. Okay, work जब complete हुआ उससे 7 days before S3 is leaving, and then remaining work is done by S2 alone. So it means at last, for last 7 days, we can say for last 7 days only S2 is working. Okay, S1 leaves the work after 3 days. Okay, तो 3 दिन तक तीनों ने काम किया, लास्ट में केवल S2 कर रहा है. नाउ बीच में कुछ डेज हैं, सपोज x डेज, जो अननोन नंबर ऑफ डेज है, सपोज वो क्या है आपके x डेज. सो ड्यूरिंग दीज x डेज हु इज वर्किंग? ड्यूरिंग दीज x डेज S2 एंड S3 बोथ आर वर्किंग. ओके, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको. सो समझने की कोशिश करो प्रॉब्लम को रीड करके क्या बोल रहा है. पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज तीनों ने वर्क किया.
लास्ट के 7 डेज में ओनली S2 ने वर्क किया, ठीक है ना, फिनिश कर दिया उसने एंड में, तो बीच में कुछ x डेज होंगे जो अननोन नंबर ऑफ डेज है, वेयर बोथ S2 एंड S3 वर्कड. नाउ टोटल वर्क डन, दिस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? 1. इन सच प्रॉब्लम्स टोटल वर्क इज न्यूमेरिकली 1, वी टेक दैट एज 1. पूरा जो काम है उसको क्या लेंगे? 1. ओके. नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, यहां तक जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये वाली, ठीक है ना, वी कैन राइट 1 डे वर्क ऑफ ईच. ओके, सो वर्क डन बाय S1 in 1 day. What is work done by S1 in 1 day? It is 1/12, because it is given that S1 can complete the work in 12 days. S1 12 दिन में काम को कर सकता है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12. ओके. Now S2 in 1 day how much work he will do? 1/18. S3 1/24. So तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1 डे वर्क कितना होगा? That we can write like this. Okay. Now here for 3 days S1 is working. So work done by S1 in these 3 days is how much? 3/12. Okay. This is work done by S1 during 3 days. And during these 3 days, work done by S2 is what? 3/18 plus, and then S3 3/24. So this is the work done by S1, S2, S3 in 3 days. Now plus in X days, work done by S2 कितना है? In 1 day he is doing 1/18 work. So in X days he will do X/18 work. Okay. Plus during these X days, work done by S3 is what? X/24. Okay. And now plus for last 7 days only S2 is working. So work done by S2 will be what? 7/18. And this total work done is equal to what? 1. ये जो complete work है क्या है? 1. So those who are present in the lecture, try to understand as well as try to solve with me. Okay, calculation आप लोग करो. So अब क्या करना है? देखो हमने यहाँ पे ध्यान से समझो कि 3 दिन का काम ये तीनों का निकाला, प्लस ये x डेज का वर्क और प्लस 7 डेज का वर्क, और नेट वर्क तो 1 है ना, तो इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1. नाउ वी हैव टू कंप्यूट x इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू कंप्यूट x इक्वल टू. ओके, सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस? We can take LCM. So LCM we can take as 72, because 72 is divisible by all 12, 18 and 24. All these numbers can divide 72. So let us take LCM 72. Okay, so ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 6 जा 72, so 18 plus, और 18 4 जा 72, so 4 into 3 12 plus 9. Okay, because 24 3 ja 72 or 3 into 3 9, plus then we have 4x plus 3x plus 28, because 18 4 ja 72, 4 into 7 28, and this is equal to 1. So from this we can calculate x. Okay, ये जो बीच के डेज हैं वो हम कंप्यूट कर सकते हैं. इंप्लाइज दैट. सो ये हो जाएगा 18 और 12. कैलकुलेशन करो अपने आप लोग, ठीक है. मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना कंसेप्ट क्या है. सो 18 और 12 30 39, और प्लस ये है आपका 28, 39 प्लस 28. ओके, और प्लस 7x इज इक्वल टू 72. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, राइट. नाउ 67 यहां पे आएगा, प्लस 7x इज इक्वल टू 72. सो x इज इक्वल टू 5/7.
फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 5/7. सो ये जो नंबर ऑफ डेज बीच में है क्या है 5/7. यहां तक सभी को क्लियर हुआ. x की वैल्यू कंप्यूट कर ली हमने. अब हमें क्या करना है नाउ वी हैव टू कंप्यूट वर्क डन बाय ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली. कि इस पूरे टोटल वर्क में जो वन वर्क कंप्लीट हुआ है S1 ने कितना वर्क किया है वो हम कंप्यूट करेंगे. S2 ने कितना वर्क किया है और S3 ने कितना वर्क किया है. हाउ मच वर्क इज डन बाय ईच ऑफ देम. दिस वी विल कंप्यूट. ओके, so we can see that this S1 is doing only during the first 3 days. So work done by S1 is what? Here I am writing now. Okay, यहां पे मैं लिख रहा हूं अभी. जो S1 है उसने टोटल वर्क कितना किया केवल यहां पे फर्स्ट 3 days. So work done is 3/12. This will be the work done by S1. Now work done by S2 इसने कितना काम किया S2 ने. So S2 ने पहले तो यहां पे किया 3 days, first 3 days. So work done is 3/18. ये वाला 3/18. Okay, plus now S2 is working for x days also here, and that work is what? x/18. Okay, x/18. और x कितना है? x we have computed as 5/7. ओके, सो x की वैल्यू हम रख सकते हैं यहां पे x/18 है ना, तो 5 रखा हमने 5/7. तो 5/18 इंटू 7 126. राइट. सो वर्क डन और प्लस एक तो ये हो गया. देखो एक तो 3/18 ये वाला हो गया. दिस वर्क बाय डन बाय S2 प्लस ये वाला वर्क हो गया और प्लस यहां पे कितना 7/18. तो प्लस का 7/18. This is work done by S2. Clear? Now what is the work done by S3? S3 ने कितना काम किया? So S3 ने फर्स्ट 3 days में भी काम किया 3/24. ओके, 3/24 प्लस उसके बाद S3 ने यहां पे वर्क किया x days. So x/24 और x आपका कितना है 5/7. Okay, so 5/24 into 7. So now we have written work done by each S1, S2 and S3. तीनों ने जो इंडिविजुअल वर्क किया वो यहां पे हमने लिख दिया. ठीक है ना, इसको बस सिंप्लीफाई करना है अब आपको. ओके, यही कंसेप्ट था मेन. अब आगे का प्रोसीजर बता देता हूं, इजीली यू कैन डू. ओके, सो एनी स्टूडेंट हु इज सॉल्विंग हियर? लक्ष्मी प्रसाद. ओके, अब आपको क्या करना है. देखो कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आपको कि हमने कंप्यूट कर लिया वर्क डन बाय S1. टोटल वर्क कितना हुआ उसमें S1 का कंट्रीब्यूशन, S2 का कंट्रीब्यूशन, S3 का कंट्रीब्यूशन. इसको सिंप्लीफाई करो और इसका रेशियो कंप्यूट करना है अब कि किस रेशियो में है. राइट, वी हैव टू कंप्यूट द रेशियो ऑफ S1, रेशियो S2, रेशियो S3. नाउ डिवाइड दिस 3024 इन दैट रेशियो. दिस इज टू बी डन योर सेल्फ नाउ. ओके, आपको कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं करना. ठीक है, आपको बस ये रेशियो निकाल के इस अमाउंट को उस रेशियो में डिवाइड करना है. ठीक है, एंड देन व्हाट इज द शेयर ऑफ S2 दैट यू हैव टू कंप्यूट. मेन concept was I was to explain that I have explained here. I hope you can solve it further. सिंपल है, इनको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके. ठीक है ना, 18 सभी में कॉमन आ सकता है और यहाँ पे 24 भी आ सकता है. तो सिंप्लीफाई कर लो तीनों को, रेशियो निकाल लो, इनका नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ठीक है ना, और उसके बाद जो S2 का शेयर है वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. सो ये करना है सभी को कंप्लीट. If you can do it right now, you can do it, or later you can do it. So finally you will get 1800.
सी एज द राइट आंसर. ओके, नोट डाउन कर लो इसको, लास्ट में सी आंसर आपको निकालना है. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सो इट वाज लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में स्किप करना है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. रीड करो एक बार इसको. और ये कंसेप्ट भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में क्लास के अंदर. इसके बहुत सारे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं इन क्लास, जो रेगुलर क्लास हम करेंगे आगे एचपीसीएल के लिए. अभी इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचपीसीएल एग्जाम. नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस. कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एप्टीट्यूड सेक्शन. इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, राइट. अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, ठीक है ना. कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मींस आफ्टर एवरी 6 मंथ्स वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट एंड देन वी आर एडिंग दैट इंटरेस्ट इनटू द प्रिंसिपल, ठीक है ना. कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि आफ्टर ईच 6 मंथ्स वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट एंड देन वी आर एडिंग दैट इंटरेस्ट इनटू द प्रिंसिपल एंड फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर दैट total will be the principal. Okay, then again after 6 months we will again compute the interest and we will add that into the principal, new principal. Okay, so now suppose rate of interest for 6 months. Okay, our time unit, here we have a time unit in which we are making the calculations. Okay, we are calculating the interest. So it is half year, मतलब 6 months, half year. This is our time unit. And suppose rate of interest per half year is R%. Suppose rate of interest per half year, okay, R% per half year. ये मान लेंगे हम. So we have to compute the value of R. But in this question they are asking rate of interest per annum. So if for 6 months interest rate is R, for 12 months it will be double. Okay, so interest is according to the time duration. Clear? If they say that for 6 months interest rate is R%, so if we do calculation yearly, okay, then interest will be what? 2R, double. If I say that what will be the interest rate of interest per quarter, so it will be divided by 2, so R by 2 in that case. Clear? So answer will be 2R. We have to compute R and then our answer will be 2R. Okay, now so in 1 year we have to calculate total compound interest. So in first 6 months we get some compound interest CI1 and then in next 6 months we get some compound interest and this total CI1 plus CI2, this total is given as 6450. ओके, पहले 6 मंथ्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा प्लस अगले 6 मंथ्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो टोटल इंटरेस्ट जो है आपका वो हमें कितना मिल रहा है? 6450. ये हमारा इक्वेशन है. अब पहले 6 मंथ्स की अगर हम बात करें फॉर 1 यूनिट, सो वी नो दैट फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट इज पीआरटी अपॉन 100. ओके, जो हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं पीआरटी अपॉन 100, ये वाला. सो इसमें जो P है, अभी हमने लिखा पीआरटी अपॉन 100, तो T तो 1 ही है ना, 1 टाइम यूनिट, एक ही टाइम यूनिट है ना हमारी ये 6 मंथ्स की, इसको 1 लेंगे हम. ओके, 1 टाइम यूनिट. सो T क्या रहेगा आपका? 1. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा इसमें? PR अपॉन 100. दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. नाउ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स this compound interest will be added into the principal. Okay, so we have P, that was the earlier principal, plus the compound interest incurred PR upon 100. So this is the principal now. Okay, this is the principal, and on this principal we have to compute the interest for this second unit for next 6 months. So again we will use the same formula, principal into rate into time upon 100. So this is the principal, rate is R, time unit is 1 again, this is 1 time unit, so T is equal to, we will take 1 upon 100, and this total is equal to 6450. So simple equation we are getting this. Okay, so now this PR upon 100,
और प्लस P इंटू R अपॉन 100, सो वी कैन से 2PR डिवाइड बाई 100 और प्लस PR स्क्वायर अपॉन 10,000 is equal to 6450. Now this P is nothing but principal. That initially that was 20,000. So 2 into 20,000 into rate of interest R upon 100. Okay, plus this principal 20,000 into R square upon 10,000 is equal to 6450. ठीक है ना? आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक स्टेप, सो इट विल टेक सम टाइम. ओके, लेकिन आप जब खुद सोल्व करोगे सो इट विल नॉट टेक टाइम बिकॉज यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन समवन ना, आपको तो सीधा सोल्व करना है. सो यू कैन स्किप मेनी स्टेप्स, लाइक डायरेक्टली आप कर सकते हो कुछ स्टेप्स को स्किप करके, बट आई हैव टू एक्सप्लेन हियर, सो दैट व्हाई आई एम राइटिंग एवरीथिंग. नाउ ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे ये चारों जीरो यहां पे कैंसिल हो जाएंगे इससे. ठीक है, और एक 2 यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से 2. सो वी विल गेट व्हाट? R स्क्वायर. वी विल गेट इक्वेशन R स्क्वायर. ओके, यहां से कितना आ रहा है? R स्क्वायर. ये वाला 2 हमने दोनों तरफ से डिवाइड किया और प्लस 200R प्लस 200R और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -3225 और इज इक्वल टू 0. सो वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R. ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, R की वैल्यू यहां से कंप्यूट करनी है. ठीक है, तो ये आपको यहां से डायरेक्टली भी पता चल सकता है, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे. बेटर है कि इसको फैक्टराइज कर सकते हो. ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना है? वी हैव टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन quantity. So now we can see here, we have to think about two numbers whose product is -3225 and their total sum is 200. Okay, since product is negative, the numbers will be of opposite sign because their product is negative and net sum is 200, right? So how we can get such factors? So we can try to factorize this 3225. Okay, so I am doing it here. 3225 को फैक्टराइज करने की ट्राई कर सकते हैं. सो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, पहले जैसे 5 से डिविजुअल है, सो इनटू 6 4 5. अगेन अगर 5 से करते हैं, दिस वन. ओके, दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 3. सो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 9 4 3 सॉरी 4 3. ओके, अब देखो यहां पे ये क्या है? 5 इंटू 3 15 है ये वाला, और ये 5 इंटू 43 कितना होगा? एक तो 15 बना और एक बना 5 इंटू 43 215. सो वी गोट टू नंबर्स, एक है 215 और एक है 15. सो दिस, इनका जो प्रोडक्ट है वो ये है. ठीक है ना? अब निगेटिव प्रोडक्ट लेना तो अपोजिट साइन में लेना जिससे नेट रिजल्ट ये बने. So we can write R square plus 215R और minus this 15R और minus 3225 और is equal to 0. Okay, so इनका नेट रिजल्ट क्या बनेगा? 200. Now you can take this common. R को आप यहां से कॉमन ले सकते हो और इसको सिंप्लीफाई करोगे. सो R इज इक्वल टू -215 और 15. सो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू. सो R इज इक्वल टू व्हाट? 15 फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड आंसर विल बी 2R बिकॉज दिस इज फॉर 6 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 months. फॉर 1 year इट इज 2R. सो 30 विल बी द राइट आंसर. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और क्लास के अंदर हम जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के हम उसमें सॉल्व करते हैं जिससे क्लियरिटी हो जाती है. ठीक है ना? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते. वो क्या करते हैं? टाइम यूनिट चेंज अलग रखेंगे. ठीक है, कंपाउंडिंग कब करनी है, व्हेन यू हैव टू डू द कंपाउंडिंग, वो अलग टाइम होता है.
और कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो डिफरेंट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको प्रिपेयर करना है फॉर एचपीसीएल एग्जाम। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी, और इट विल सेव योर टाइम, आप जल्दी से सोल्व कर सकते हो। A system of equations is given to you and which one is the solution set? So ऑप्शन पुट करके आप देख सकते हो, वहीं से हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। तो ये आप इमीडिएटली कर देंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा इमीडिएटली इसको निपटा के खत्म करना है, राइट, वहां पे स्किप नहीं करना। तो कैसे करना है, सपोज हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो -1 यहां पे रखा हमने, -1, और प्लस 2 × 2 4, और प्लस 3 × 3 9। सो कितना बन रहा है 12, लेकिन इधर 10 दिया हुआ है, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, सो कट दिस। ओके, नाउ पुट दिस वन, बी ऑप्शन। सो 1 + 4 + 9, so 14, but it is given here 10, so it is also not satisfying. So in this manner you can check all the options easily and you can tick the answer. So last option, if we see this 3 + 4 7 + 3 10, so this will be the right answer which will satisfy all the equations. So solution means a set of values of x, y, z which satisfy all the equations in the system, that is the solution. Okay, so D answer will be there, very easy question. Now come to next, again easy level question. Okay, आपका टाइम सेव करेगा ये, it will save your time in the exam, so you can solve immediately and you can write down the answer in the chat box here. Satyam Sinha, what is the answer? Any other student? HPCL एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसमें 2023 का जो क्वांट सेक्शन दैट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है ना, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड सेक्शन टू गिव यू आइडिया व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज द लेवल. ओके, सो दिस इज इजी क्वेश्चंस. Width of a rectangular hole is 9/11. Okay, B is equal to 9/11. This is the width of its length. Okay, of is its length means into L. B is equal to 9/11 into L. Now area is A is equal to, we know that area of a rectangular hole is LB, length into width, which is equal to 99. Okay, so L and into 9/11, L is equal to 99. So clearly L is equal to 11 here. So they are asking difference between length and width. So 11 minus 9, if we take L is equal to 11 here, so B is equal to 9. Okay, B is equal to 9. So difference will be 2. So A will be the right answer. Easy question. It will save your time in exam. Come to the next. Now read this question carefully and try to answer it. Okay, Satyam Sinha, what is the answer of this question number 6 now? Anyone who got the answer, write down the answer in the chat box.
So let us understand some important concept. If we have a cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. Suppose we have a general cubic equation. So this equation has three roots, say alpha, beta, gamma. Okay, alpha, beta, gamma are the roots of this equation. There is a relationship between roots and coefficients of this equation. Okay, so first relation is sum of the roots, that is alpha plus beta plus gamma. This is written as minus b divided by a. Okay, so if we compare this equation with this standard form, we can write this equation as 7x cube plus 0x square plus 4x minus 7 is equal to 0. Okay, this is the standard form we can compare. So what is sum of roots? A plus b plus c. A, b, c are the roots. So sum of roots will be, according to this formula, it will be minus 0 upon 7, which is equal to 0. So sum of roots is 0. And then we are having another formula, sum of product of roots taken 2 at a time. So alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Okay, this is equal to c divided by a, and we have product alpha beta gamma, that is minus d divided by a. Okay, so if we write here AB plus BC plus CA, we can write it also. This will be what? 4 upon 7, and product ABC is equal to minus of minus 7 upon 7, so it is equal to 1. Now there is a very important relationship which you have to remember. Okay, we can prove that also later, but right now please remember that if three numbers A, B, C are such that their sum is 0, if A plus B plus C is equal to 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, वेरीफाई भी किया जा सकता है. ओके, कोई भी तीन नंबर आपके पास हैं जिनका सम 0 है, अगर उनके क्यूब्स को ऐड करोगे आप, देन यू विल गेट 3ABC. ओके, थ्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. सो इन दिस क्वेश्चन we can see that A plus B plus C is equal to 0, and they are asking A cube plus B cube plus C cube. Okay, so A cube plus B cube or plus C cube, so it is equal to 3ABC. ABC is 1, so 3 into 1 is equal to 3. So C option will be the answer to this question. Okay, so it is moderate question, not lengthy, and simple conceptual question, and such question generally they ask in exam. Now I hope you understood this. Satyam Sinha, is it clear? Lakshmi Prasad? Okay, now let us move to the next question. Question number 7. Okay, so read this question. Pipe R alone can fill a tank in 144 hours, and pipe S alone can fill the same tank in 216 hours. Both the pipes are opened on alternate hours, one at a time, and pipe S is opened for the first hour. Then in how much time the tank will be completely full? So it is not tough question, it is not lengthy question, it is moderate question. Okay, you can try it in first go also, no problem.
रीड करो क्वेश्चन को एक बार, सोचो क्या करना है. ओके, so let me explain now. देखो, pipe R alone can fill a tank in 144 hours. So water filled by pipe R in 1 hour. Okay, in 1 hour it will be 1 upon 144. Full tank is assumed to be 1. पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को क्या बोलेंगे न्यूमेरिकली? 1. ओके, सो अगर 144 आवर्स में 1 टैंक फुल हो सकता है, सो इन 1 आवर हाउ मच टैंक विल बी फुल? 1 अपॉन 144. एंड S, जो S है ये अकेला भर सकता है 216 आवर्स में. सो इन 1 आवर हाउ मच वाटर इट कैन फिल? 1 अपॉन 216. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. Now, first of all, S is opened for 1 hour. S is opened. Okay, S, and then R, then S, then R, then S, then R, and so on. So, in how much time the tank will be completely full? So, we can see that this pair is repeated. So, this is 2 hours. Okay, water filled in 2 hours is this total. Then again in 2 hours, this is repeated. Again in 2 hours, this is repeated. This pair is repeated again and again. So for 2 hours, we can calculate how much water is filled in the tank. So it is S plus R, means 1 upon 216 or plus this 1 upon 144. This is water filled in first 2 hours by both S and R. So we can take LCM as their product, 216 into 144. So now in the numerator we will have 144 plus 216, which is equal to 360 divided by 216 multiplied by 144. Now इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. सो 12 से कैंसिल कर सकते हैं या 36 से भी कर सकते हैं. 36 10 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स. सो इट इज 5 डिवाइडेड बाई 432. 5 divided by 432. This is water filled in. This is water filled in 2 hours. Now we have to make it 1. This is equal to 1 because we want complete tank to filled. So in how many hours? Suppose in how many hours it will become 1. So into number of hours is equal to we want 1. So X we have to compute. Okay. Now suppose this is pair. Okay. Each pair of 2 hours. So such pairs, and each pair is of 2 hours, right? So if we take 80, suppose X is 80, so it is 400, right? So it is less than 1 because 400 upon 432. So it will be more than 80 actually. This number will be more than 80. Okay. So if it is more than 80, try to understand. If we take here 80, 80 into 5 is what? 400 upon 432. It is less than 1 na? So we need it more than 80. 80 means number of hours is 160. If we take X is equal to 80, so there are 2 into 80, 160 hours. So answer will be more than 160. If answer is more than 160, so these options are eliminated. These cannot be the answer. Okay. Now, if we take this, we want to make it 180. 180 hours means X is equal to 90. So 90 into 5 is what? 450. That is 450 is bigger than 432, more than 1. Okay. So this may be answer, but we can check lesser than this, na? Okay. So it X will be less than 90, we can check. Suppose we take 88. Suppose we take X is equal to 88. Or we can try for this option 173. Na? So we can think 173 means 172 upon 2.
172 upon 2. 86. So if we take x is equal to 86, suppose it is 430 upon 432. Okay, so if we take 86, then it is approximately equal. On taking x is equal to 86, it will be 172 or plus one more hour may be required so that it will become equal to 1. So obviously we can see this, or we can write x is equal to 87 also. That will become more than this, more than this. Okay, so 173 will be the right answer. Got it? सत्यम सिन्हा, राइट. सो 173 बिकॉज 86 में क्या होगा, पूरा फिल नहीं होगा. ठीक है ना, 86 अगर लेते हैं सो ये थोड़ा सा बचेगा, तो अगले आवर्स में 86 का मतलब 172 आवर्स, नेक्स्ट 1 आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा. सो सी विल बी द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट. Write the answer in the chat box. Satyam, what is the answer now? So circles, circle is very important in from mensuration part of view as well as geometry. जो सर्किल है वो आपको प्रिपेयर करना है, और सर्किल का मेंसुरेशन वाला पार्ट, एरिया और पैरामीटर वाला, सेक्टर वाला, ठीक है ना. इन सर्किल वी हैव टू प्रिपेयर एरिया, सेक्टर, ओके, एंड सेगमेंट, आर्क लेंथ, एंड देन ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ आल्सो, ओके, एंड टेंजेंट. ठीक है, जो टेंजेंट वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला बेसिक पार्ट होता है, ज्योमेट्री वाला पार्ट, दैट आल्सो यू हैव टू प्रिपेयर, ओके, बिकॉज दे कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन. So the sum of radius of the two circle is 12 and the distance between center is 17. So it means the circles are not touching each other. Okay, so we can draw this bigger circle and this smaller circle. These are the circles actually. This one and this one are the centers. Okay, now the common tangent, direct common tangent is this tangent, like this one. Now if we join this O with this point of contact, we know that this is radius, this is tangent, so there is 90-degree angle here. And if we join this center O dash, suppose, with this point of contact, this is also 90-degree. Okay, this radius is 10, this is 10, and this is 2. Okay, now they want this length of the common tangent, direct common tangent L. So this L is to be computed. And distance between the centers is given as 17. This is the distance between the centers. So what we can do, from this point, draw a perpendicular on this radius. Okay, so this will be the perpendicular, we can say. So obviously if this is 90, okay, this is also 90. So these are parallel, okay. So we get a rectangle, we can see. This is a rectangle. Now here we are, suppose this point is P. So here we are getting a right angle triangle, okay. And this total is 10 minus this 2. This will become 2 because it is 2. So it is a rectangle. So 2. So 10 minus 2 is what? 8. This is 8. This is 17. So using the Pythagoras theorem, if this is 17, this is 8. So this will be 15 obviously. And this is a rectangle here. So it is also 15. So L is equal to 15. From geometry, we can get this answer. Okay. So what did you write? Satyam, is it clear?
याद रखना ये concept, how to compute length of the direct common tangent if distance between the center is given and the radius are given for both the circles. Now come to next question number 9. Okay, good. So now what will be the answer of this question? "18 people sit around a circular table. What is the probability that two particular persons will always sit together?" Okay. So क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट. सपोज वी हैव n डिफरेंट पीपल and we have to arrange them in a linear method, means line, in a row. There will be n factorial arrangement, remember. Okay, अगर n people है उनको एक लाइन में बैठाना है रो में, so कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? n factorial. But if we are having n people and they have to sit around a circular table, then in how many ways they can sit? How many circular permutations can be there? So answer is n minus 1 factorial. So their total number of arrangement will be 18 minus 1 factorial. So 17 factorial. This will be our total number of arrangement. Okay, 17 factorial. याद रखना है कि n minus 1 factorial हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स. ओके, स्पेशली जब किसी टेबल के अराउंड बैठते हैं n पीपल, सो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट? n minus 1 factorial. सो 17 factorial will be the total number of ways. सैंपल स्पेस में हमारे कितने वेज है? 17 factorial. Now favorable outcomes. Now we have to compute favorable cases. So what is the probability that two particular persons will always sit together? Okay, two particular person will always sit together. So suppose we are having here A1, A2, A3, A4. No need to write all of them, but I am writing to explain only. Okay, A5, A6, A7, A8. Okay, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18. सपोज ये हमने बैठाए हैं 18 पीपल. नाउ वी वांट दीज टू ऑलवेज टुगेदर. सपोज दीज मस्ट अकर ऑलवेज टुगेदर. सो अगर ये दो हमने अलग कर लिए, बॉक्स में बंद कर लिए, ठीक है ना, इनको एक जगह पैक कर दो, ऐसे पैक कर दिया. सो बाकी कितने बचे हैं? बाकी जो अरेंजमेंट है हमारे पास 18 थे, दो को पैक कर दिया, सो 16 और एक ये वाला पैकेज, सो 17. सो वी हैव 17 आइटम्स जिनको अरेंज करना है. सो 17 आइटम्स को एक सर्किल में अरेंज करना है. इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज? 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, नाउ दीज टू पर्सन विच आर इन ए पैकेज, दे कैन रीअरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज. सो इनटू 2 फैक्टोरियल. Okay, so it is 16 factorial multiplied by 2 divided by 17 factorial can be written as 17 multiplied by 16 factorial. So 16 factorial get cancelled. So we are getting 2 upon 17 as the answer. So simple question from probability permutation combination concept we can get in our HPCL examination. सत्यम सिन्हा, यस, डोंट वरी. जो रेगुलर क्लासेस हैं आपकी, जिसमें कंप्लीट थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. ओके, दोज विल स्टार्ट सून. आई थिंक 10th of June से स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? सो दिस 9th क्वेश्चन आई होप क्लियर टू एवरीवन. 2 upon 17 is the right answer. Now come to the next question. Question number 10. So try to find out the answer.
6783. Product of 3 consecutive odd numbers is 6783. What is the sum of these numbers? So what will be the answer? Think about it. So product of 3 consecutive odd numbers. So let us factorize this ना, इसको factorize करने का try करते हैं. So इसको divide करें 3 से, अगर हम भाई 2 से तो divide नहीं होगा ना, so 3 से try कर सकते हैं. For a number to be divisible by 3, what is the condition? Sum of the digits must be multiple of 3. So what is the sum? 24. So this number is divisible by 3. So let us divide by 3. So it is 3 into 2261. अगेन अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? अब देखो 3 से तो ये होगा नहीं, अब ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज कितना आ रहा है, 11 आ रहा है टोटल सम. सो 3 से नहीं होगा. आगे चलेंगे, किससे कर सकते हैं? 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से ट्राई कर सकते हैं. सो 3 इंटू 7 इंटू 7 3 जा 21, बचा 1 16, 7 2 जा 14, so 21, 7 3 जा 21. So yes, it can be divided by 7. अब 323, ये तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा. आगे 7 4 जा 28, नहीं होगा 7 से. उसके आगे अब किससे हो सकता है? 7 के आगे जो नंबर्स हैं, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं है, नहीं 10 से नहीं होगा, 11 से डिवाइड ट्राई कर सकते हैं. 22 और 103 नहीं होगा 11 से भी. आगे चलेंगे, 12 से नहीं होगा, 13 से ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा 13 से. सो 17 से ट्राई करते हैं इसको अब, बिकॉज ये चेक करना होता है वेदर इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट. एक क्लास में मैं टॉपिक डिस्कस करता हूं कि कोई भी नंबर है, दैट नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. ओके, ये हम टेस्ट करते हैं, राइट. सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, और स्क्वायर रूट के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है, we check the divisivity by those numbers only. If given number is divisible by any one of those prime numbers, we say that it is not a prime number. And if that is not a divisible by any number, any prime number less than the square root, then it is a prime number. Okay, so we know that square of 18 is 324. Okay, so its square root will be what? 17 point something. So we can try by 17. So 3 into 7 into 17 into कितना बचेगा? 17 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अलग कर सकते हैं, 153. सो 19. अब ये 7 और 3 का प्रोडक्ट कितना बन जा रहा है? 21. सो इंटू 17 इंटू 19. सो वी गोट 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, 17 19 21. ये तीनों ओड नंबर कंसेक्यूटिव हैं, whose प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6783. सो डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है इसमें, ठीक है. सो व्हाट इज द सम? इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लोगे आप, और उसका जो सम आएगा दैट विल बी द आंसर. सो 57 विल बी द सम. गॉट इट? दिस वाज फ्रॉम नंबर सिस्टम, नॉर्मल क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट. Yes, yes, Satyam. Now, ये एक टेबल गिवन है, मार्क प्राइस एंड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट ऑफ 7 आर्टिकल्स. ओके, ये आर्टिकल्स है, उनका मार्क प्राइस है और उन पे कितना डिस्काउंट है, ठीक है.
So selling price is equal to, we know that, mark price minus discount. So यहाँ पे हम selling price का एक फील्ड जनरेट कर सकते थे, ठीक है, वो दिया नहीं है उन्होंने, बस बता दिया कि selling price is equal to mark price minus discount. Now what is the difference between average selling price and average marked price of all the articles? So what is the average selling price? ठीक है ना. So SP डिवाइड बाई एन. एन कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है ना. एन ले लेते हैं. SP अपॉन 7. दिस इज एवरेज सेलिंग प्राइस. ओके. एंड व्हाट इज एवरेज मार्क्ड प्राइस? एवरेज मार्क्ड प्राइस इज व्हाट? द सम ऑफ मार्क प्राइस SM डिवाइड बाई 7. राइट भाई, मार्क प्राइस का जो एवरेज होगा इसका, वो क्या होगा? सम ऑफ मार्क प्राइस दिस वन अपॉन 7. और सेलिंग प्राइस का क्या होगा? SP का SP अपॉन 7. SP मींस सम ऑफ सेलिंग प्राइस. नाउ दे आर आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, राइट? नाउ SP इज व्हाट? ये जो सम है, SP का मतलब क्या पे दिया हुआ है, देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट है ना. सो सम ऑफ, समीशन लगाएंगे दोनों तरफ. सो समीशन ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब SP इज इक्वल टू MP टोटल. ये SP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल, ठीक है ना. ये भी क्या है? टोटल यहां पे. सो SP इज इक्वल टू MP, ये हम बोल सकते हैं मार्क प्राइस SM माइनस D अपॉन 7. और ये क्या है? SM अपॉन 7. सो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? D अपॉन 7. और D अपॉन 7, भाई इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस? D अपॉन 7. और D अपॉन 7 मतलब टोटल डिस्काउंट अपॉन 7. सो इनको ऐड कर लो टोटल और डिवाइड बाय 7 कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, एवरेज निकालना है. एवरेज सेलिंग प्राइस और एवरेज मार्क प्राइस का डिफरेंस निकालना है. तो वो क्या होगा? जो डिस्काउंट का एवरेज आएगा, दैट विल बी द आंसर. सिंपल. सो आई होप यू कैन मेक दिस कैलकुलेशन. इनको ऐड करो सबको और डिवाइड बाय 7 कर लो, राइट? Now come to next question number 12. Read the question carefully. सो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है. अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ठीक है ना. वी हैव ए फॉर्मूला फॉर अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और इंटू N. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. Okay, so is equal to, if we write this, so P we can take common, P into 1 plus R upon 100 to the power N or minus 1. This will be the compound interest, formula for compound interest. Now what is the principal? Principal is 8500. So we can write this 8500 as the principal bracket. Now rate of interest. Now read the question carefully. Compounded in every 4 months. This is the important point. Interest is compounded in every 4 months. So it means our one time unit is a 4 month. Okay, 4 months. This is one time unit. One time unit. Okay. Now total interest we want for 8 months. So in 4 months we have one time unit. So in 8 months how many time unit will be there? If 4 months is equal to one time unit, then 8 months will be what? 2 unit will be there. So this n will be 2. This n represent number of time unit. So n is equal to what? 2. Okay. Now this rate of interest is 27% per annum. Per annum. Okay. So it means 27% per 12 months. Annum means 12 months. However, we are doing the compounding in 4 months. So we need to calculate a new rate for 4 months duration. So in 4 months. Okay. So if we divide this 12 by 3, we get 4.
So here also we need to divide by 3. So 9% per 4 months. So rate of interest R will be 9% per 4 months. So R will be 9. So it is 1 plus 9 upon 100 whole square minus 1. This will be the answer, and you can simplify this. You can do a plus b whole square, you can use here. Okay, it is your responsibility to calculate it now. Okay, you can use a plus b whole square also. So 1 plus a square plus b square plus 2ab और माइनस 1. सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और जो बचेगा उसको आप अरेंज करके सिंप्लीफाई कर लोगे. यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. प्लीज नोट डाउन दिस. सो ये तरीका जो है, इस तरीके के क्वेश्चन देखो पहले भी आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एक पेपर में, ठीक है ना. सो दिस इज इंपोर्टेंट चैप्टर. 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, राइट. 3 क्वेश्चन फ्रॉम 1 चैप्टर यू कैन गेट इन HPCL एग्जाम, because there are 34 aptitude questions. Now come to question number 13. So read this question and try to find out the answer. Think about it. The average of 24 consecutive even numbers is 133. Okay. So suppose first number, you know, consecutive even numbers, we can see that consecutive even numbers make AP having common difference 2. Similarly, consecutive odd numbers form AP having common difference 2, right? So suppose A is the first term. A is the first term, first number, okay, even number, and D is 2. D means what? Common difference. And there are 24 numbers. So N is equal to 24. So what will be the sum of these numbers? The sum of these numbers using the arithmetic progression will be, we know that this is the formula, N by 2, 2A plus N minus 1 into D. This is the formula for calculating sum of n numbers of an AP having common difference D and first term A, right? So according to this formula, n is 24. So we get 24 divided by 2 multiplied by 2A plus n minus 1 with 23 into D. D is 2. And this is equal to how much? Now we know that sum of numbers is equal to their average multiplied by their number. So average is 133. So their sum will be 24 into 133. Right? This is their sum, na? Because there are 24 numbers whose average is 133. So their sum will be 24 into 133. So this 24 and 24 get cancelled, and this 2 get cancelled, 2 get cancelled. So we get A plus 23 is equal to 133. So A is equal to 110. So the first integer is 110. Okay. Now what they are asking, if the next even number is also considered, then what will be the new average? So new average means what? New sum. We can see new sum. Okay. Divided by total number will become 25. If the next number is also included, there will be 25 numbers. Now what is this new sum? New sum means the sum of these 24 numbers. So 24 into 133 plus next number means 25th number. And using the AP also we can compute the 25th number. We know that nth number is A plus n minus 1 into D. This is the formula to calculate the nth number of an AP. So A is what? 110 plus, we have to calculate 25th number. So 25 minus 1 was the 24 or into D. So 158.
Okay, so this is 158 and divide by 25. So you multiply these two numbers, add 158 and then divide by 25, you will get the answer.